ICSC. So let's continue the chapter. How do organisms reproduce? Shall we start today's session, students? Are you ready? Join as early as possible. Let's start today's session. Okay, fine. So, hi everybody. Today we are going to study about modes of asexual reproduction, because in the last class what we have discussed, how do organisms reproduce, the difference between what sexual reproduction and asexual reproduction we have seen. There are two types of reproduction definition also we have seen. First, we are going to study about asexual reproduction. Asexual reproduction occurs in lower organisms, not highly well developed organisms. Okay, lower organisms. There are different types are there, students. Fission, already we have seen. Fragmentation, there not in detail we have seen, the names we have seen. Fission, fragmentation, regeneration, budding, vegetative propagation, and spore formation. Another one is there. Okay. So let's start the modes of asexual reproduction. Today's topic, modes of asexual reproduction. First, the topic is fission. What do you mean by fission? Fission is nothing but, students, parent cell will be there. One parent cell. Parent cell divides into daughter cells is called fission. This is a what definition of fission. फिजन मतलब ब्रेक होना है, ब्रेक. पेरेंट सेल रहता है, उससे क्या हो जाता है, वो डिवाइड होके क्या हो जाता है, डॉटर सेल्स बन जाता है. एक पेरेंट सेल से डॉटर सेल्स बन जाता है, उसका ही क्या है, फिजन. सिंपल है, बहुत इजी है. पेरेंट सेल डिवाइड्स इनटू डॉटर सेल्स. अगर अभी आपको दिखा दे तो एक पेरेंट सेल है, वो डिवाइड होके क्या हो जाता है, डॉटर सेल्स बन जाता है. दो बन गया तो बाइनरी फिजन, बहुत सारा डॉटर सेल्स बन गया तो मल्टीपल फिजन. उतना ही सिंपल. एक इसमें होता है, एग्जाम्पल इज अमीबा एंड लेशमेनिया, स्टूडेंट्स. लेशमेनिया एंड so many other organisms are also there. Just for example, in which organisms binary fission occurs? What do you mean by binary fission? Let's see. The mother cell divides into two daughter cells. एक मदर सेल रहता है, उससे है ना दो डॉटर सेल बन जाता है. आपको आज मैं इंटरेस्टिंग what the session will be going on, a very interesting, students. Okay, how? Let's see now. So amoeba's binary fission you want to see? Okay, let's see here. So everybody see here, this is amoeba. Okay, amoeba mother cell is dividing now. Whether it is dividing? Yes. Nucleus is dividing slowly. One mother cell is becoming into two daughter cells. Are you getting? Video is clear? Understanding? Fine. So this is called as binary fission. One mother cell, single mother cell divides into two daughter cells. Example is amoeba leishmania. याद रख लो. Fission का definition क्या है? Mother cell divides into daughter cells is called fission. In fission there are two types: binary fission, multiple fission. Binary fission means mother cell divides into two daughter cells is called, तुम लोग ऐसे ही नहीं लिखना है, पूर्ति लिखना है, full you have to write. Mother cell divides into two daughter cells is called binary fission. Example amoeba leishmania. Leishmania is also one of the lower organism. Is it clear? Fine. So next multiple fission. Multiple fission क्या है? Mother cell divides into many daughter cells. Mother cell divides into many daughter cells is called multiple fission. Example is plasmodium. A plasmodium क्या है? It will cause us malaria, students. Malaria. ये किससे आता है? मच्छर से आता है. When mosquito they are having this plasmodium protozoa, these microorganisms protozoa in their body, when this
Mosquitoes will bite. If the plasmodium enters our body, then we will get malaria. In rainy season, will be more water, mosquitoes. Okay, if that mosquitoes, female Anopheles mosquito is responsible for causing malaria, because female Anopheles mosquitoes, they lay eggs. That's why they need more blood. They bite humans and they suck the blood. So in that mosquitoes, if plasmodium is present, if plasmodium will enter our body, we may get malaria. Let's see how plasmodiums, okay, the one video is there regarding multiple fission. Okay, so let's see here. Are you getting? Mosquito is biting, plasmodium whether it is entering the body. So what's happening, students? One mother cell is dividing into many daughter cells. Yes, now you are understanding clearly. This is an example of plasmodium, multiple fission. Video is clear? Are you getting? Understanding? Yes. Let's see here. One cell is there. So now see, many daughter cells will form, students. Now you see. One cell is dividing into many daughter cells, multiple fission. बहुत सारा सेल्स बन रहा है एक सेल से. समझ में आ गया? वीडियो कंप्लीट हो गया? यस. Okay, so this is about plasmodium. Plasmodium is an example for multiple fission. One mother cell divides into many daughter cells, students. So what we have seen just now, first modes of asexual reproduction, first one, fission. In fission there are two types, binary fission, multiple fission. Fission is completed. Next we are going to see about fragmentation. What do you mean by fragmentation? ये जो fragmentation, first we will understand the definition. The organism breaks up. So please give a like, heart, comments, your name and place, from which place you are observing this one. Please comment in comment section, students. The organism breaks into smaller pieces upon maturation, and each piece develop into new individuals, is called fragmentation. Example is Spirogyra. आपको easy में मैं बता देता हूँ. I will explain you very easily. This is one Spirogyra organism is there. Okay? ये क्या हो जाता है? टुकड़ा 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 हो जाता है, फ्रैगमेंट्स हो जाता है. एक टुकड़ा जो हो गया है, ईच टुकड़ा एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाता है. उतना ही ऑर्गेनिज्म ब्रेक्स इनटू स्मॉलर पीसेस अपॉन मैचुरेशन. मैचुरेशन मतलब क्या है? वो जब भी बड़े हो जाते हैं, डेवलप हो जाते हैं, एंड ईच पीस सेपरेट नए ऑर्गेनिज्म बन जाते हैं. एग्जांपल इज प्लास्मोडियम, स्टूडेंट्स. नाउ यू आर गोइंग टू सी हियर इन दिस वीडियो रिगार्डिंग व्हाट? फ्रैगमेंटेशन. Fragmentation is happening, students. What is that? Spirogyra. Now it is breaking up into smaller pieces. Small piece is developing into new organism. So example is Spirogyra. Spirogyra actually comes under plants. Okay, algae especially. Okay, fine. One thing you have to remember, the fission happens in unicellular organisms, and from fragmentation all this asexual mode of reproduction occurs in multicellular organisms. आप लोगों को पता है यूनिसेलुलर मतलब क्या है? मल्टीसेलुलर. The organism which body is made up of single cell is called unicellular. So fission takes place only in unicellular organisms, and fragmentation, regeneration, budding, vegetative propagation, spore formation takes place in
multicellular organisms. Okay, fine. Next we are going to see about regeneration. Regeneration मतलब क्या होता है? देखो एक ऑर्गेनिज्म है planaria. What is planaria? Platyhelminthes. It comes under invertebrates platyhelminthes. If planaria is cut, हम उसको चाकू लेके कट 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 छोटा 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 पीसेस किया समझो. If we cut that organism into small pieces, उस छोटा 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 पीस भी है ना फिर ऑर्गेनिज्म बन जाता है. वो एग्जाम्पल है प्लानेरिया है, हाइड्रा है. एक्चुअली रीजनरेशन इज नॉट ए मोड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक्चुअली, but this is they have given in your textbook. Actually regeneration आप लोग ये समझो कि definition, if organism is somehow cut or broken into many pieces, each piece grows into a complete organism is called regeneration. Regeneration फिर से generate होना है, regeneration. Example is planaria and hydra. So now you are going to see about planaria regeneration. Are you getting, students? This is an organism planaria which comes under platyhelminthes. Now it is cutting into pieces. हो गया है. Okay, cutting. अभी each cut है ना जो piece है ना वो grow हो रहा है, develop हो रहा है, regenerate हो रहा है. Are you getting, students? Wonderful session. Today's session you are understanding easily by these visual aids. आप ये वीडियो से अच्छी तरह से समझ में आप लोगों को आ रहा है. ओके, प्लानेरिया. Understood, students? Yes. One thing I want to tell you, planaria, they are having eye-like structures, but they can't see anything. Only they detect the light. Planaria is an organism. They are having eye-like structures, but they can't see anything. Only they detect light is there, light is not there. That much only. Okay, this is a and regeneration is one of the special quality of प्लानेरिया. हम लोगों के अंदर भी रीजनरेशन होता है. जब भी वुंड हो जाता है, घाय हो जाता है, कुछ तो हमारा हाथ कट जाता है, थोड़ी दिन के बाद फिर से क्या होता है स्टूडेंट्स? सो रिकवर हो जाता है, रीजनरेशन हो जाता है. समझ में आ रहा है आप लोगों को? यस. सो टुडे इज रक्षाबंधन. सो मेनी ऑफ माय स्टूडेंट्स हैव what and sister. So happy Raksha Bandhan to each and everyone, students. Okay, fine. Let's continue. You are also my my brothers and sisters. So happy Raksha Bandhan to you people also. Okay, fine. So next we are seeing about budding. What is budding? देखो एक ऑर्गेनिज्म है, ईस्ट है समझो. ईस्ट इज एन एग्जांपल फॉर बडिंग. ईस्ट इज एन यूनिसेल्युलर algae. इट इज. ईस्ट हम लोग खाने के अंदर डालते हैं. ओके, ब्रेड, इडली, डोसा और ढोकला, बेकरी आइटम्स में ईस्ट डालते हैं स्टूडेंट्स. माइक्रो ऑर्गेनिज्म है. ईस्ट कभी डेवलप होता है, उसको एक छोटा सा बड आ जाता है स्टूडेंट्स, छोटा सा. ये बड क्या होते जाता है स्टूडेंट्स? इट विल ग्रो स्टूडेंट्स. दिस बड विल ग्रो. व्हेन इट विल ग्रो अपॉन कंप्लीट मैच्योरेशन, it will detach from the parent body and it will become separate organism. एक छोटा सा बड होता है ना, इसलिए हम लोग क्या कहते हैं? बडिंग कहते हैं स्टूडेंट्स. सो जस्ट नाउ वी हैव सीन fission, we have seen fragmentation, we have seen regeneration, we have seen, now we are seeing budding. A bud is formed which develops into tiny individual. छोटा सा एक ऑर्गेनिज्म उसके साथ में ग्रो होता है. कब? एक मैच्योरेशन होने के बाद. इट डिटैचेस फ्रॉम द पेरेंट बॉडी. पेरेंट बॉडी से डिटैच होता है. कब होता है? अपॉन मैच्योरेशन. जब भी बड़ा हो जाता है, सेपरेट हो जाता है. एंड डेवलप्स इनटू न्यू इंडिविजुअल. एग्जांपल इज हाइड्रा. सर हाइड्रा यू हैव टोल्ड regeneration. Actually I have told you, regeneration is not a type of asexual mode of reproduction. It is one of the process.
So in Hydra, what happens? Regeneration. So planaria, how the reproduction will happen? Planaria actually fission, binary fission, the process of asexual reproduction takes place. Okay, fine. So now let's see the how Hydra will grow by the process of budding. Let's see students. Okay. See this is an Hydra, नॉन मोटाइल, मतलब एक घूमता नहीं है, पानी के अंदर रहता है, एक ही जगह पे रहता है. वो बहुत सारे दिखाई दे रहा है ना, ऊपर टेंटाकल्स है, वो टेंटाकल्स. सेपरेट बड ग्रो हो रहा है स्टूडेंट्स, अभी होगा. एक मदर सेल है, उससे है ना मदर ऑर्गेनिज्म से छोटा सा बड आ रहा है, बडिंग प्रोसेस है ये. क्या है ये? व्हाट इज दिस प्रोसेस? बडिंग. देखो बड़ा होते जा रहा है, बड़ा होने के बाद डिटैच हो जाता है पेरेंट से, बाजू में आके बैठ जाता है, ग्रो होने लगता है. यस, so this is an example for budding students. How is today's live session students? So please give like, hearts and comment, and if you have not subscribed, please subscribe my channel Shri Gopal Kulkarni YouTube channel. Okay, fine. So now we are moving towards the next session, that is known as vegetative propagation. What is the next topic students? Vegetative propagation comes under asexual reproduction. This is the fifth one. First one fission, second one fragmentation, third one regeneration, fourth one budding, fifth one is vegetative propagation. Vegetative propagation happens in plants. Where does this reproduction happen students? Plants. So in many plants, बहुत सारे प्लांट्स के अंदर जो सीड्स नहीं होते हैं ना, फ्लावर्स नहीं होते हैं ना, उनके अंदर ये होता है स्टूडेंट्स. सर सीड्स होते हैं, फ्लावर होते हैं, वो क्या है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. वी आर गोइंग टू स्टडी आफ्टरवर्ड्स. सीड्स नहीं होते हैं, फ्लावर विल नॉट कम. In those plants, how the reproduction will take place? Vegetative propagation. In many plants, new plants are developed from the vegetative parts. उनके जो पार्ट से है ना, नए नए फिर से नए ऑर्गेनिजम्स आते हैं, उनके ही जाति का, उनके ही if potato, one potato if you cut and put in the soil, many potatoes will come students. Okay, so from that vegetative parts, the what new plants will come. That process is known as vegetative propagation. Okay, yes. Now, first, vegetative propagation by roots. रूट से है ना बहुत सारे उसके बॉडी से बहुत सारे बन जाते हैं. देखो एग्जाम्पल आपको इधर दिखाया है, दालिया एंड स्वीट पोटैटो. स्वीट पोटैटो आप लोग सभी लोगों को पता है. सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ दालिया. व्हाट इज दालिया स्टूडेंट्स? इट इज ए फ्लावर. दालिया इज ए फ्लावर, लेकिन वो रूट से है ना ऐसा डेवलप होता है स्टूडेंट्स. रूट से, और रूट से बहुत सारा पार्ट्स आ रहा है, वो ग्रो हो रहा है, बाद में प्लांट बन जाएगा, फ्लावर आएगा. फ्लावर कैसा है स्टूडेंट्स? Flower of dahlia you want to see? Okay, ये देखो आपको मिल जाएगा इधर. So this is dahlia. Okay, dahlia flower. Okay, clear? How it develops students? It develops by roots. It is develops from vegetative propagation only. By how? By roots. Dahlia, sweet potato सभी लोगों को पता है. So see, dahlia, beautiful flowers are there, wonderful flowers are there. Is it clear students? Sweet potato is an example for what? Vegetative propagation by roots.
Okay, fine. So next, वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय स्टेम. स्टेम से भी है ना बहुत सारे नए नए जो organisms will develop, new organisms will develop. New organisms means not different organisms, same type of organisms, new individuals by stem. First one is by root, second one is by stem. Students, example is potato and ginger. अदरक सभी लोगों को पता है, पोटैटो सभी लोगों को पता है, बटाटा, पोटैटो, आलू गड्ढे. देखो उसके अंदर से जो प्लांट ग्रो हो रहा है, एक्चुअली पोटैटो अंडरग्राउंड में ग्रो होता है, वो रूट नहीं है. व्हाट इज दैट वन? स्टेम. स्टूडेंट्स, ट्यूबर स्टेम. गॉट इट? नाउ जिंजर, लेट्स सी. जिंजर सभी लोगों को पता है. अदरक हिंदी में क्या कहते हैं? अदरक कहते हैं. एक्चुअली वो स्टेम नहीं, स्टेम है, वो रूट नहीं है. जिंजर चाय में जो डालते हैं ठंडी के मौसम में, चाय में डाल के पी गए तो थोड़ा सा खांसी, कोल्ड एंड कफ, it will reduce. And that ginger is very good for digestion. Students, we have to boil the water and put the ginger, and that water we have to drink. It will increase our immunity power, digestion, so it is very good for digestion purpose. Okay, now bryophyllum. Students, example I am telling you, bryophyllum is an example for vegetative propagation by leaves. एक लीफ होता है ब्रायोफिलम, उनके क्या है, उनके लीव्स से है ना बहुत सारे प्लांट्स निकल जाता है. स्टूडेंट्स, लीव्स से प्लांट निकलता है सर? यस, इनका रूट्स भी होते हैं, ऐसे ऐसे रूट्स भी होते हैं. सो लीव्स से जो पैदा होने वाला है वेजिटेटिव प्रोपगेशन, वो है ब्रायोफिलम. स्टूडेंट्स देखो इधर, लीव्स, एक लीफ से है ना बहुत सारा प्लांट हो रहा है, रूट्स भी दिखाई दे रहा है, प्लांट्स भी आपको दिखाई दे रहा है, लीफ से, एक सिंगल लीफ से. सो दिस इज एन एग्जांपल फॉर व्हाट? वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय लीव्स. एग्जांपल इज ब्रायोफिलम. एग्जांपल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. यू हैव टू राइट इन योर एग्जामिनेशन. नेम, डेफिनेशन, एग्जांपल. नेम, डेफिनेशन, एग्जांपल, you have to write. Very important. If they ask only the definition, then also you have to write examples, so you will get full marks. Don't miss the examples while writing the answers in your examination. FA2, FA3, PT1, PT2, SA1, main examinations. Okay, fine. So ये जो नेचुरल मेथड हो गया है वेजिटेटिव प्रोपगेशन, अभी हम लोग देखेंगे आर्टिफिशियल मेथड. आर्टिफिशियल मेथड से भी हम लोग, by human we can do vegetative propagation. How? Example is grafting. Grafting means what, students? Grafting is an example. One example is mango. Okay, see here. By seeing this image you will understand grafting in mango. एक अच्छा ग्रो, ऑलरेडी ग्रोन स्टेम को है ना, ये जो नया मैंगो का है ना, जो आप लगा देना चाहिए, और उधर प्लास्टिक वगैरह कुछ तो जिगट पट्टी, सेलो टेप बांधना चाहिए, उसको पानी के अंदर रख देना चाहिए, या नहीं तो सॉइल के अंदर डाल के रख देना चाहिए. थोड़ी दिन के अंदर आपको जल्दी से जल्दी मैंगो मिल जाएगा. आर्टिफिशियल मेथड, ग्राफ्टिंग. स्टूडेंट्स, नेक्स्ट, कटिंग. कटिंग मतलब क्या है? कट करना है, आना है, लगाना है. रोज इज एन एग्जांपल बेस्ट फॉर कटिंग. आपको रोज जल्दी से जल्दी आप ग्रो करना चाहिए. व्हाट यू हैव टू डू, एक रोज का है ना स्टेम है ना, क्रॉस में कटिंग करना चाहिए. स्टूडेंट्स, क्रॉस, नॉट लाइक दिस स्ट्रेट, क्रॉस में कट करके हनी में डुबाना चाहिए. हनी, शहद. यू हैव टू पुट इन पोटैटो.
Why? Potato will give you that food more and more because potato contains starch. It will provide food and वो पोटैटो को सॉइल के अंदर रख दीजिए, थोड़े दिन के अंदर बहुत सारे रोज आपके घर के अंदर देखने के लिए मिल जाएगा. You want to grow more and more grows, more roses. Take one stem of rose, put it in honey, just dip it in and put it in potato. Okay, you make one hole in potato and put that rose stem and keep that potato in soil, and little bit you put the soil and pour the water. Within few days you will get more and more roses, so it will looks very nice in our house. Okay, so cutting is an example for rose. So next we are going to see about layering. लेयरिंग मतलब क्या है? बहुत बहुत इजी है, बहुत सिंपल है. एक झाड़ है, ओके, उसका रूट्स बाहर आए रहते हैं और रूट्स को लेके फिर से हम लोग सॉइल के अंदर लगाना है. उससे क्या हो जाता है? रूट्स बन जाता है, फिर से ऐसे ही नया प्लांट ग्रो हो जाता है. उसको क्या कहते हैं हम? लेयर्स आता है ना, लेयरिंग. देखो इधर एक वन प्लांट इज देयर, जास्मिन इज देयर. उसका जो रूट बाहर आ गया है, वो रूट को है ना फिर से सॉइल में दबाना है थोड़ा सा, फिर से रूट ग्रो हो जाएगा, नया प्लांट आ जाएगा. सो what we have seen, students, artificial methods: grafting, cutting, layering. So grafting example is mango. So many are there, just example you have to keep in your mind. Okay, one example which is given in your textbook: cutting rose and layering jasmine. So हम लोगों को थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है, सर व्हाट वी हैव टू डू. जीएम याद रख लो. जीएम जीएम क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय जीएम? GM means not general merit, students. GM मतलब grafting mango, not good morning. Grafting mango. CR cutting rose. Cutting is an artificial method of vegetative propagation. Rose flower plant. layering कौन सा है? jasmine. इतना 10 बार आप लोग बोल दीजिए. GMCRLJ, GMCRLJ, LJCRGM. 10 बार रिपीट इन योर माइंड. 10 times you have to repeat. GM grafting mango, mango is an example. Cutting rose, LJ layering jasmine. Fine, fantastic, easy. So these all are artificial methods of vegetative propagation. Naturally by roots, by stem, by leaves. By roots examples: dahlia, sweet potato. By stem, potato, ginger. By leaves, bryophyllum is an example. So इधर क्या है, क्या लिखा है? लीफ नॉचेस. जो लीफ का जो एंड में रहता है ना, एंड नॉचेस, बियर बड्स, छोटे 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 प्लांट निकलता है, विच डेवलप इनटू प्लांट्स. उसको कट करना है, सॉइल में डालना है, फिर से ब्रायोफिलम प्लांट ग्रो हो जाएगा. ओके, so what we have seen, students, today, the modes of asexual reproduction we have seen. So in modes of asexual reproduction we have seen fission definition. The parent cell divides into daughter cells is called fission. There are two types of fission: binary fission, multiple fission. Binary fission, the mother cell divides into two daughter cells is called binary fission. Example is amoeba, leishmania. Multiple fission, the mother cell divides into many daughter cells is called multiple fission. Example is plasmodium, which causes malaria. I am telling very quickly because already it is completed. The second type of mode of asexual reproduction is called fragmentation. One single parent divides, cut into many pieces, and each piece develop into a new organism. Example Spirogyra. Third one is regeneration. Example is planaria and hydra. When organism is broken, accidentally broken into two or more pieces, each piece develop into new organism is called by what? Regeneration. Next one is budding. When organism will develop into completely, a small bud will bear, and this bud will develop, matures. Upon maturation it detaches from parent body and it grows into new organism. Example is yeast and hydra. The next one is vegetative propagation by roots, by stem. Okay, regeneration के अंदर
लिजर्ड, लिजर्ड आप लोगों को पता है आपके घर के अंदर रहते हैं, छिपकली या चिपलक कुछ तो कहते हैं हिंदी में, छिपकली, हल्ली, हल्ली बाला कट, when it tail will cut again the tail will grow, that is also an example for regeneration. Our skin is an some regenerative cells will grow in our body also. Okay, so planaria and this hydra you have to remember. Okay, fine. So next one is artificial, sorry, vegetative propagation. Vegetative propagation, the many plants will give new plants. Development from vegetative parts. कौन से vegetative parts? By roots, by stem, by leaves. By roots, dahlia, sweet potato. By roots, by stem, potato, ginger. By leaves, bryophyllum. Artificial methods are also there. GM, CR, LG. GM, grafting, mango, CR, cutting, rose, LJ, layering, jasmine. Fine, fantastic. So please comment your name and place from which place you are seeing, students. So I want to show my ID, students. Just listen, see here. My Shri Gopal Kulkarni YouTube channel is my channel. So personal channel. So I am here watch uploading some spiritual videos as well as some live classes for class 10 biology and chemistry. So please subscribe, like, comment and share, my dear students. So today is Saturday, tomorrow there will be no class. So Monday to Saturday 7:30 p.m. So don't miss 30 minutes, definitely will score more in SSLC. Thank you. Until then, keep watching, keep learning. Bye bye, students. Okay.